नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट। तो आइए जानते हैं इंडेक्स के लिए क्रूशियल लेवल्स क्या रहेंगे आज के इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, एज वेल एज द मेन सेक्टर्स इन फोकस टुडे which could relatively outperform and underperform. First up, coming to the update in the global markets. So it was a mixed session in the US markets yesterday, wherein the S&P 500 and the Dow closed in the red, while the Nasdaq relatively outperformed. So we had the Dow which closed 0.8% lower, while the S&P 500 closed down 0.18%, while the Nasdaq managed to end the session 0.18% higher. At the current juncture, the main support zone for S&P 500 would be the levels of 5,770, while on the upside the zone of 5,890 will act as the crucial hurdle. ब्रेंट ऑयल में एक स्लाइट पुल बैक देखी गई थी कल के ट्रेडिंग सेशन में, बट द ओवरऑल ट्रैजेक्टरी फॉर द इंडेक्स कंटिन्यूज टू रिमेन ऑन द नेगेटिव साइड, with the immediate support zone being 72.372 levels. If the index slips below that, we could see a correction towards 69.50. Coming to the update regarding dollar index, तो डॉलर इंडेक्स में एक रिलेटिवली पॉजिटिव ट्रेंड देखा जा रहा है फ्रॉम द पास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस, विद द इंडेक्स क्लियरली ट्रेडिंग above its short term and long term averages. The index is currently at 103.96 and it gained 0.48% yesterday. Going ahead, it is likely to continue its positive momentum and test the levels of 104.50. Now coming to the update regarding our markets. तो कल के ट्रेडिंग सेशन में बेंचमार्क इंडेक्स में वापस सेलिंग प्रेशर देखने को मिला. द इंडेक्स ओपनड विद अ स्लाइट पॉजिटिव नोट, बट पोस्ट दैट द इंडेक्स एनकाउंटर्ड सेलिंग प्रेशर. It ended the session at 24,781 with a cut of 0.29%. If we see the daily chart of the index, it has formed a bearish candle. Going ahead, 24,660 will act as the immediate support. If the index slips below 24,660, we could see further pressure towards 24,550 levels. On the upside, the levels of 24,880 will act as the immediate hurdle. अगर ऑप्शन चेन की बात करें तो 24,800 और 24,900 के स्ट्राइक में कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है, while on the put side it is mainly seen in 24,700 and 24,500 strikes. अगर वीकली पीसीआर के बारे में डिस्कस करें तो इट करंटली स्टैंड्स एट 0.59, while the monthly PCR is at 0.92. Coming to the update regarding बैंक निफ्टी, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी में भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, वेयर इन द इंडेक्स फेल्ड टू सस्टेन अबाउ द 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ऑफ इट्स प्रायर डाउनवर्ड रैली, that is from 54,467 towards 50,194, and thereafter witnessed selling pressure. It ended the session at 51,962 with a cut of 0.25%. Going ahead, the levels of 51,400 will act as the immediate support for the index. Any sustainable move below the levels of 51,400 would lead to further pressure towards 51,000 strike. On the upside, the main resistance is seen closer towards 52,200. अगर ऑप्शन चेन की बात करें बैंक निफ्टी का, so 52,000 and 52,200 strike has decent amount of call writing, while on the put side 51,500 and 51,000 has substantial open interest. For Bank Nifty, the weekly PCR currently is at 0.87, while the monthly PCR is at 0.92. कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर एडवांस डिक्लाइन का नंबर देखें तो इट क्लियरली टिल्टेड इन फेवर ऑफ द डिक्लाइनिंग काउंटर्स. And now coming to the key sectors in focus. So Nifty FMCG, Nifty Media, Nifty CPSE, Nifty PSE, Nifty Metal, Nifty Oil and Gas, ये सारे sectors relatively underperform कर रहे current juncture पे, while the one sector which is showing relative outperformance is Nifty Financial Services at the current juncture, and we believe that particular sector is likely to outperform. Coming to the FII data, तो FIIs have been constant sellers in the cash segment, और कल के ट्रेडिंग सेशन में भी उन्होंने कैश सेगमेंट में सेल किया टू द ट्यून ऑफ 2,261 crores, while DIs purchased to the tune of 3,225 crores. That's it for today's session. Thank you for regularly tuning in. Do tune in tomorrow for more market updates and insights. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.